राज्य सरकार के श्रमिक कल्याण विभाग की पहल से अब युवाओं को मिलेगा बिल्कुल मुफ्त प्रोफेशनल प्रशिक्षण। APSC, नीट, जेई एविएशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जैसे बड़े कोर्सेज के लिए फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। इस खास योजना के तहत चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज दुमदुमा में पहले चरण के तहत इच्छुक छात्रों का पंजीकरण औपचारिक रूप से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया असम सरकार के श्रमिक कल्याण मंत्री और दुमदुमा विधायक रूपेश गोवाला ने। खास बात यह है कि यह योजना सिर्फ दुमदुमा तक सीमित नहीं है। पूरे असम में शिक्षित छात्रों को चयन के जरिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। विगत बहुत सरकार चालू, किंतु विगत सरकार सकले आमार अखमर निबनुआ छात्र छात्री सकলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে এনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু হাতত লোৱা আমি দেখা নাপালো। কিন্তু আজি আমাৰ এই নিবনুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ কৰি দিছে। আজি নিটৰ কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, যি কোচিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, লগতে APSC আৰু নানান তেনেধৰণৰ তেখেতসকলৰ যি প্ৰতিভা আছে সেই প্ৰতিভাসমূহ তেখেতসকলে উলিয়াই লৈ অহাত তেখেতসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভূমিকা লৈছে। তাৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনাগত দিনত যাতে আমাৰ এই নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আৰু যাতে ব্যৱস্থা কৰে তাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ।